Hello friends, today we will discuss about an important topic that is meaning, types and functions of education. This topic is very essential for all type of students starting from plus 2 to MA education, B.Ed, M.Ed, BA honors and also all type of the competitive examinations. Let us discuss what topics will be discussed in this class. The first thing is your etymological meaning of education. Education from Indian point of view, from Western point of view, narrower and broader meaning of education. Education is a process, types of education, like your formal, informal, non-formal, and functions of education. Okay, let me start from the meaning of education. The first, the importance of education. Education is a very broader concept and it is very essential for human beings, for society, for nation also. So it is said that education is the spinal cord of the society. The development of the society depends on the educated people. It is also the backbone of a nation and destiny maker of a citizen. It is essential human virtue which makes a man brilliant, bright, and beautiful. A man without education is a splendid slave and reasoning savage. So Aristotle says, educated men are as much superior to uneducated as living are to the dead. ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ମାଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉଭୟ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା କଳା କୌଶଳ ଶିଖାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ବିନା ମଣିଷ ମୃତ ସଦୃଶ୍ୟ। ଶିକ୍ଷା ବିନା ମଣିଷ ପଶୁ ସଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମଣିଷ ଯଦି ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ବା ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଏଜୁକେସନ? Actually, the concept education is very wide and comprehensive. Its boundaries are rich and varied. So it is very difficult to tell in a single sentence what education is. But for the sake of convenience, we divide the meaning of education under three heads: derivative meaning of education, education from Eastern point of view, and education from Western point of view. ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷା ଏକ ବ୍ୟାପକ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କହିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ତଥାପି ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତିନି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଉତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାବିତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିଦେଶୀ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାବିତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ ଡେରିଭେଟିଭ ମିନିଂ ଅଫ ଏଜୁକେସନ, ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଉତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ। So from a Western point of view, it is believed that education is coined from the four Latin words, that is educare, educare, educatum and e plus dico. Educare means what? To draw out, to bring forth, सृष्टि करिबा, जन्म करिबा, उन्मेष करिबा, एटा हला educare अर्थ। Educare means to take care of, to bring off, to nourish, to nurture, जत्न नवा, लालन पालन करिबा, educare. Educatum means to train, act of teaching, अर्थात शिक्षादान बा प्रशिक्षण धारा बा पद्धति ताको आमे एडुकेटम कहबा। E plus dico means, if E means out of and dico refers to internal to external, अर्थात गोटे अंतर्निहित बा लुकायित गुणवली को प्रकाश करिबा, विकास करिया होची शिक्षा। From Indian point of view, in India, education is called shiksha or vidya. The word shiksha is derived from the Sanskrit root shas, which means discipline, to teach, to instruct or to control. शिक्षार अर्थ होची शिक्षादान देबा बा अनुशासन बा नियंत्रण रखिबा। Vid, which means to know, it is also derived from the Sanskrit root vid, which means to know or knowledge, जानिबा बा ज्ञान हासिल करिबा होची vid। एबे देखिबा केतरा डेफिनेशन। Ancient Indian thinkers manଙ୍କର ऋग्वेद, according to ऋग्वेद, education makes a man self reliant and selfless, जहाँ मनीष को निस्वार्थपर कराए एवं आत्म संयमी कराए ताहा होची शिक्षा। उपनिषद कहउचंती एजुकेशन इज दैट हुज एंड प्रोडक्ट इज सल्वेशन, मुक्ति शिक्षार शेष गति आत्मार सदगति, सा विद्या जा विमुक्त है। पाणिनि ह्यूमन एजुकेशन मीन्स द ट्रेनिंग व्हिच वन गेट्स फ्रॉम नेचर, जे जहाँ आमे प्रकृति पाउछु ताको आमे मानवीय शिक्षा बोली कहिथाउ बा जहाँ प्रकृति आमे प्रशिक्षण पाइथाउ।
कौटल्य कहते एजुकेशन इज ट्रेनिंग फॉर द कंट्री एंड लव फॉर द नेशन। तो राष्ट्र को भल पाइबा एवं बा देश माने देश संबंध में प्रशिक्षण नेबा एवं राष्ट्र को भल पाइबा होची शिक्षा। शंकराचार्य कहते एजुकेशन इज रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, अर्थात ना आत्म साक्षात्कार ही शिक्षा। से भाया विवेकानंद कहते एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन मैन। विवेकानंद भाषा मनीष भितर दैवता अच्छी से दैव माने दैवत्वर परिप्रकाश होची शिक्षा, जहाँकि मनीष भितर अच्छी एवं शिक्षा ही ताकू जो दैवत्व परिप्रकाश करिपारिबो। स्वामी विवेकानंद से स्वामी दयानंद सरस्वती सेस एजुकेशन इज मीन्स फॉर कैरेक्टर फॉर्मेशन एंड राइटियस लिविंग। गांधी सेस by education I mean an all round drawing out of the best in child and man body mind and spirit। अर्थात शिशु शिक्षा कहले मु बुझे शिशु और मनुष्यर शरीर मन और आत्मार सर्वोत्कृष्ट परिप्रकाश व सर्वांगीण विकास। सो गोपबंधु कहते बाय एजुकेशन आई डोंट मीन द टीचिंग इन द स्कूल। एजुकेशन इज व्हाट वाज इम्पार्टेड इन एंशिएंट इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड सेंटर ऑफ रिलीजियंस थ्रू आउट द प्रोविंस। गोपबंधु कहते वर्तमान जो 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 तत्काल जो शिक्षा प्रदान करा शिक्षा प्रकृत शिक्षा नुहे मो मतरे, जहाँ अतीत गुरुकुल गुड़िक दिया धार्मिक अनुष्ठान गुड़िक दिया ताहा होछि प्रकृत शिक्षा। विदेशी मान भर पाश्चात्य शिक्षाविद मैंने कौन कहते प्लाटो कहते एजुकेशन इज द कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन एट द राइट मोमेंट। शिक्षा आम जाचे जीवन जो गोलापर सेज नुहे, विभिन्न समय दुख सुख आसो, तेणु दुख आनंद और विषाद को जो सह्य कर एवं उपभोग करिवार जो शक्ति और सामर्थ्य होची शिक्षा। अरिस्टोटल सेस एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। उत्तम शरीर माध्यम उत्तम मन बा मानसिक अवस्था सृष्टि करबा होची शिक्षा। टेस्टोलॉजी कहउचंती एजुकेशन द नेचुरल हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन्स इनेट पावर। मनुष्य भीतर जो इनेट पावर अच्छी द टू डेवलप द योर लेटेंट पावर द हिडन पावर ऑफ एन इंडिविजुअल इट थ्रू नेचुरल एंड हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव वे। अर्थात मनुष्य भीतर थिबा लुकायित गुणावली को स्वाभाविक भाव में सामग्रिक भाव में प्रगतिशील भाव में विकास कर प्रक्रिया होची शिक्षा। फ्रबल सेस एजुकेशन इज एनफोल्डमेंट ऑफ व्हाट इज एनफोल्डेड इन जिम। जहाँ लुकायित अवस्था अच्छी ताकू बाहर को आनिबा प्रकट करबा बा विकास करबा होची शिक्षा। एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग। स्पेंसर मतरे एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग। से भाई हार्वर्ड कहते एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ गुड कैरेक्टर। डेवलपमेंट ऑफ गुड कैरेक्टर इज द एजुकेशन। जदि यही सब शिक्षार विभिन्न आम जो संज्ञा को आलोचना करें आम जापर एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इनेट पावर ऑफ द चाइल्ड। शिशुर लुकायित गुणावली शिशुर जो धीशक्ति अच्छी लुकायित गुणावली अच्छी तार प्रकाश तार विकास होची शिक्षा। एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। आचरण परिवर्तन होची शिक्षा। एजुकेशन इज ए लाइफिंग प्रोसेस which starts from birth and ends in that death. Education is salvation. Education is liberation. Okay. Education is an instrument for making man self-sufficient. Education is the process of all-round development of the individual. जहाँ शिक्षा मनुष्य को कौन करे ना व्यक्तिर सर्वांगीण विकास करे, शिशुर सर्वांगीण विकास करे। बर्तमान आलोचना करिबा नेरो मीनिंग एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षार संकीर्ण अर्थ एवं व्यापक अर्थ। संकीर्ण अर्थ रे शिक्षा का कहबा ना द एजुकेशन व्हिच इज कन्फाइन्ड इन द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ओनली व्हिच इज प्रोवाइडेड थ्रू फॉर्मल वे एंड वेयर द करिकुलम इज फिक्स्ड, एम इज फिक्स्ड, स्टूडेंट्स आर फिक्स्ड, टीचर्स आर फिक्स्ड, okay, and which is particularly meant for providing any certificate. It is periodic in nature and the examples of your we can see the formal education, the education which is provided in the school, college, university etc. अर्थात जो शिक्षा अनुष्ठानिक भाव में प्रदान कराई थाए विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय मान प्रदान कराई थाए जार लक्ष्य पुनर्निर्धारित थाए पाठ्यक्रम पुनर्निर्धारित थाए शिक्षक शिक्षार्थी एवं पाठ पढ़ाइबा स्थान बा शिक्षादान स्थान मध्य निरूपित थाए ताको आमे औपचारिक शिक्षा कहूचे। यह एक निर्दिष्ट समय पर्यंत चली थाए। यार उद्देश्य होची जदि कौनसी व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण करे औपचारिक शिक्षा ग्रहण करे ताको गोटे प्रमाण पत्र दिया जाए बा सर्टिफिकेट देवा डिग्री बा डिप्लोमा दिया जाए। बट इन ब्रॉडर सेंस एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इट इज नॉट इंस्टीट्यूशनल. It is not institutional. We get the such type of education throughout the life from birth to death and from different sources, right? So there is no fixed curriculum. There is no what we can say no fixed curriculum in broader sense.
व्यापक अर्थ रे शिक्षा होची जीवन हो दिवे कहले जीवन ही शिक्षा एवं शिक्षा ही जीवन लाइफ एजुकेशन इज लाइफ एंड लाइफ इज एजुकेशन तो शिक्षा कौन निर्दिष्ट शिक्षा अनुष्ठान भितर सीमित नुहे व्यापक अर्थ रे व्यापक अर्थ रे होची संपूर्ण जीवन होची शिक्षामय एवं संपूर्ण जीवन रे विभिन्न उत्सरु विभिन्न लोकंक ठारू विभिन्न अनुष्ठान ठारू आमे जो शिक्षा पाउचे जो अनुभव पाउचे ता होची शिक्षा तो व्यापक अर्थ रे शिक्षा होची शिक्षा एक जीवनव्यापी प्रक्रिया शिक्षा एक धारावाहिक प्रक्रिया सो एजुकेशन इज ए प्रोसेस according to John Adams it is very important for you education is a bipolar process शिक्षा एक द्विपाक्षिक प्रक्रिया what are the two poles teacher and student एजुकेशन इज ए बाइपोलर प्रोसेस शिक्षा एक द्विपाक्षिक प्रक्रिया तार दुईटा पक्ष होचे गोटे शिक्षक एवं आउ गोटे होचे शिक्षार्थी यू नो व्हाट अबाउट द टीचर इज कंप्लीटली एक्सपीरियंस्ड matured who always interested to help the students for developing the students and students is completely immature who always seek the help of or guide of the teacher शिक्षा एक द्विपाक्षिक प्रक्रिया जदि आम देखा जन आडम भाषा से दुईटा पक्ष है शिक्षक और शिक्षार्थी शिक्षक जन परिपक्व व्यक्तित्व जन अभिज्ञ व्यक्तित्व जे कि सदा सर्वदा शिक्षार्थी विकास शिक्षार्थी समस्या समाधान करने प्रयास करते छात्र जे कि माने तुलनात्मक भाव में शिक्षक तुलना भाव में अनभिज्ञ एवं अपरिपक्व सब शिक्षक सहायता चिंता करते एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस जॉन डिवे कहते जॉन डिवे सपोर्ट्स द your definition of John Adams that education is a bipolar process but he adds another thing besides your people teacher or students and teacher social environment society also plays very important for education अर्थात माने जॉन डिवे को कहवा कथा होची से जॉन आडम मत को से स्वीकार करुचंते एवं सम्मान जणाया सहित से कहउचंते जे शिक्षा द्विपाक्षिक प्रक्रिया सहित आउ गोटे तार गोटे पक्ष अछि बा आउ गोटे स्तंभ अछि ता होची सामाजिक परिवेश बा समाज समाज बिना शिक्षा गुणात्मक शिक्षा एवं संपूर्ण शिक्षा संभव नुहे तेणु शिक्षा पाई तीनोटी पक्ष गोटे छात्र छात्री आउडला शिक्षक आउडला परिवेश वर्तमान देखिया टाइप्स ऑफ एजुकेशन शिक्षार प्रकार भेद there are three types of education one is formal another is informal and next is non-formal you know well what is formal informal and non-formal you know what is formal education औपचारिक शिक्षा the education which is imparted in a controlled condition or a particular place is called formal education what is informal education the education which is provided accidentally or it is not deliberately given okay so in your formal education is education promoted in school colleges universities and other educational institutions is called formal education it is planned for modifying the behavior of the learners here aims and objectives of education are predetermined curriculum is prescribed methods of teaching disciplines roles of teacher and students are pre-decided अर्थात औपचारिक शिक्षा होची जोटी कि आनुष्ठानिक भाव में प्रदान करा जाय थाए विद्यालय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय दिया जाय थाए जार उद्देश्य होची पिलामानकर आचरण परिवर्तन करिवा जार उद्देश्य होची पिलामानक एक प्रमाण पत्र देबा डिग्री डिप्लोमा देबा एवं एई भली शिक्षा रे लक्ष्य पुनर्निर्धारित हेई थाए पाठ्यक्रम प्रस्तावित हेई थाए पाठ्यदान बा पाठ्य खसडा पाठ्यदान पद्धति शिक्षक एवं शिक्षार्थी ये सब पूर्व निर्धारित होता एवं स्थान पूर्व निर्धारित होता है एवं जो औपचारिक शिक्षा विशेष कर भाव में आनुष्ठानिक शिक्षा प्रदान करने ही ये शिक्षा अनुष्ठान गुड़िक होता है किंतु अनौपचारिक शिक्षा आनुष्ठानिक शिक्षा होता है अनौपचारिक शिक्षा अनौपचारिक भाव में प्रदान कराई था या कौन निरूपित पाठ्यक्रम ना कि शिक्षार लक्ष्य किसी ना तार कौन निर्दिष्ट शिक्षक शिक्षार्थी ना व्यक्ति जीवन काल मध्य विभिन्न स्तर में विभिन्न स्थान में विभिन्न उत्सर विभिन्न प्रकार अनुभव शिक्षा करें विभिन्न कथा शिक्षा करें ज्ञान हासिल करें आचरण परिवर्तन करें तेणु ए कौन प्रकार सर्टिफिकेट देवाक पड़े ना कि माने कौन से प्रमाण पत्र डिग्री डिप्लोमा देवाक पड़े ना तो अनौपचारिक शिक्षा जीवनव्यापी प्रक्रिया अटे तापर देखिबा नॉन फॉर्मल एजुकेशन What is non-formal education? Non-formal education is the midway between formal and informal. It means that non-formal education borrows some good characteristics of formal education and you are in informal education. For example, you know formal education is very rigid in nature and informal education is very flexible in nature. So non-formal education borrows some rigid principle and some you are what the flexible principle. So non-formal education the education which is provided through
in corresponding way, particularly the education through IGNOU, NIOS, Odisha State Open University, correspondence course, postal tuition, etc. are the best example of non-formal education. Okay. Let me discuss what are the functions of education. I have already told you what are the role of education, what are the functions of education, and education plays very important role for nation building, for the character building of the human beings, to making the individual self-dependent and self-reliant, and also for the global peace, international integrity, international understanding, international relation. Education is very essential. So Sri Aurobindo says the function of education is to enable a human being to do for self, nation and divine. अर्थात शिक्षा जन व्यक्ति को निज पाई, समाज पाई, राष्ट्र पाई एवं सारा विश्व पाई किसी काम करिया पाई से कौन करते हैं प्रेरणा देता है. DV says the function of education is to help the growing and helpless young animal into happy, moral and efficient human being. अर्थात जने शिक्षा मु बेले बेले कहे पिला मानको education turns the criminals into crime, into crime. Education turns the your dog into God. अर्थात गोटे मनुष्य भितर पशुत्व को मनुष्यत्व रे देवत्व रे परिणत करिया प्रक्रिया होची शिक्षा. शिक्षा मनुष्यर चरित्र गठन करि थाए. शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भरशील करिथाए, स्वावलंबी करिथाए एवं सी कौन करथाए ना स्वाभिमानी करिथाए. ठीक से भलिया एक संतुलित समाज पाई, एक विकसित समाज पाई, एक विकसित राष्ट्र गठन करिया पाई, एक विकसित विश्व एवं शांतिर बा शांतिपूर्ण विश्व निर्माण क्षेत्र में शिक्षार भूमिका गुरुत्वपूर्ण. तेणु शिक्षार कार्य को आम तीन भाग व्यक्त कर दी परिबा जे एजुकेशन for individual or individual functions of education, social functions of education, and education for nation. So, what are the individual functions of education? Development of man's innate power, all-round development of individual, modification of behavior, character building, sublimation of instincts, preparation of life, making man self-sufficient. अर्थात व्यक्तिर जो लुक्कायित गुणर विकास करेबा, तार सर्वांगीण विकास करेबा, शरीर मन हृदय विकास करेबा, शारीरिक मानसिक चैतिक आध्यात्मिक विकास करेबा, व्यक्तिर चरित्र विकास करेबा, तार आचरण परिवर्तन करेबा, तार प्रवृत्ति गुडी को कौन करिबा संस्कारित करिबा, तार भविष्यत जीवन पे पुनर्गठन करिबा, तो प्रस्तुत करिबा एवं मनुष्य को स्वावलंबी एवं कौन आत्मनिर्भरशील करिया होची शिक्षार व्यक्तिगत कार्य. से भलिया शिक्षार सामाजिक कार्य कौन? डेवलपमेंट ऑफ सोशल सफिशिएंसी, एनहांसमेंट ऑफ क्वालिटी फॉर सोशल एडजस्टमेंट, क्रिएशन ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी, सोशल रिफॉर्म्स, conservation, transmission and development of culture, cultivation of social value, social changes for need. अर्थात सामाजिक परिवर्तन, समय अनुसार परिस्थिति अनुसार समाज परिवर्तन, व्यक्ति को व्यक्ति भितर सामाजिक जो स्वावलंबनशीलता, सामाजिक सामर्थ्य विकास कराइबा, व्यक्ति को कौन करिबा सोशल एडजस्टमेंट, समाज सहित खाप कही चलिबार जो गुण विकास करिबा, मनुष्य को ताको सिविलाइज्ड सोसाइटी अर्थात मनुष्यर चरित्र माध्यम तार जो आचरण माध्यम एक सभ्य समाज तैयारी करिबा, सामाजिक संस्कार करिबा, संस्कृतिर कौन करिबा ना स्थानांतरण करिबा, संस्कृतिर संरक्षण करिबा, संरचना करिबा, विकास करिबा, मनुष्य भितर बा व्यक्ति भितर कौन सामाजिक मूल्यबोध विकास करिबा, ये होची ना कार्य. से भलिया राष्ट्र पई कार्य कौन? कल्टिवेटिंग सिविल वैल्यूज, गुड सिटीजनशिप ट्रेनिंग, ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप, इनकलकेटिंग वैल्यूज ऑफ नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, कल्टिवेटिंग वैल्यूज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड. राष्ट्र पई मध्य व्यक्तिर काम रही, कारण आम संस्कृति को अखंड मंडलाकार व्याप्त जनचराचर. व्यक्ति खाली निज पई नुहे, व्यक्ति समाज पई, राष्ट्र पई एवं सारा विश्व पई. तेणु ये जो मूल्यबोध जे व्यक्ति पई काम करिवो, समाज पई काम करिवो, राष्ट्र पई काम करिवो एवं सारा विश्व पई काम करिवो, ये शिक्षा माध्यम रे संभव पारे. तेणु शिक्षार काम कौन? कल्टिवेशन ऑफ सिविक वैल्यू, मन भीतर जो व्यक्ति भीतर सिविक वैल्यू जो मूल्यबोध विकास कराइबा, जो राजनीतिक मूल्यबोध विकास कराइबा, नागरिकर जो मूल्यबोध विकास कराइबा, ता भीतर गुड सिटीजनशिप ट्रेनिंग, उत्तम नागरिक किपर हेई परिबो, व्यक्तिटिए समाज बा राष्ट्रर भल नागरिक केमि हेई परिबो, एवं ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप, नेतृत्व नबार शक्ति ता भीतर केमि विकास हेई परिबो, ता भीतर जातीय संहति, जातीय एकता रो सद्भावनार विकास केमि हेई परिबो, से मूल्यबोध केमि विकास हेई परिबो, ता सहित जो विश्व भातृभाव अछि जेतु विश्व भातृभाव केमि विकास हेई परिबो, ये होची शिक्षार कार्य. आमे संक्षेप रे आलोचना कले, कौन आलोचना कले ना शिक्षार लक्ष्य अर्थ, शिक्षार व्यक्तिगत अर्थ, उत्पत्तिगत अर्थ, शिक्षार माने भारतीय चिंताधारा शिक्षा,
पाश्चात्य चिंताधारा शिक्षा शिक्षार प्रकार भेद एवं नेक्स्ट क्लास रे आमे डिस्कशन करबा जे रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी जदि भल लागिला आपण माने सब्सक्राइब करंतु आ को पाठ आपण को इच्छा अछि पढिबा पई कष्ट लागुचे मते जदि माने आपण माने मतामत देबे ताहाले से कथा को आमे निश्चित रूपे करबा।